My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we're doing total 23 reading comprehension based questions from UPSC CSAT 2026 examination. Start करते हैं session. And in 2026 examination, there were total 11 RC passages. Okay, out of those, 10 were with 2 questions each, and 1 was with 3 questions. Total 23 questions were there. And questions were comparatively more direct, क्योंकि डायरेक्टली पूछा था स्टेटमेंट्स कौन कौन से करेक्ट है. There were lesser questions based on assumptions and inferences. Mostly questions were direct statement based questions. But हाँ, इसके लिए पैसेज को तो प्रॉपर्ली पढ़ना ही पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल, और साथ में ऑल्सो लाइक दिस सेशन. सो फर्स्ट पैसेज, रीड द पैसेज एंड देन आंसर द 2 क्वेश्चंस अगर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है तो. Kalagram, the cultural village set up at the Mahakumbh Mela, unfolded as a mosaic of India's diverse regions, each represented by 7 meticulously crafted Sanskriti angans. Stepping through the grand portal was like entering another world. These thematic zones, inspired by iconic temples like Dakshineshwar Kali Temple and the Brahma Mandir, were treasure troves of regional artistry. Bengal's Pattachitra paintings, Assam's bamboo crafts, Tamil Nadu's Tanjavur paintings, and Madhya Pradesh tribal sculpture all were showcased in these living galleries where true 30 master artisans breathed life into them using age-old techniques, their hands shaping India's ancient history into creations to behold. First question है, which of the following conclusions are valid? So 4 statements given है. First statement, 7 Sanskriti agans representing different regions of the India had been showcased in Kalagram. तो क्या ये कंक्लूजन हमारा करेक्ट होगा? तो साफ साफ हमारा फर्स्ट पैसेज कह रहा है कि 7 meticulously crafted संस्कृति आंगन्स वर देयर, ठीक है, और दोज आर मोज़ैक्स ऑफ इंडियाज डाइवर्स रीजन्स. तो 7 संस्कृति आंगन्स representing different regions of India had been showcased. This is correct. First statement is correct. Second one, regional artistry was recognized by the inspiration drawn from iconic temples. That is given in the second passage. These thematic zones inspired by iconic temples. Yes, that is also correct. Third one, India's ancient history had been crafted by the contemporary craftsmanship of 230 artisans into creations to behold. So yes, 230 master artisans were there, but they breathed life into them using age-old techniques and not contemporary craftsmanship. So contemporary craftsmanship is the problem with the third statement. तो third statement हमारा incorrect हो जाएगा. First और second correct है, third is incorrect. तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? आंसर कैन बी ऑप्शन सी हो सकता है या फिर ए हो सकता है. तो थर्ड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी या फिर डी तो आंसर नहीं होगा. फोर्थ पे चेक करते हैं. आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया हैड बीन शोकेस्ड इन दीज लिविंग गैलरीज. तो हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि थीमेटिक जोन्स क्या है? 7 थीमेटिक जोन्स हैं, और फिर हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिए दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, ब्रह्म मंदिर, ट्रेजर ब्रह्म, और बंगाल्स पट्टचित्र पेंटिंग्स, असम बैम्बू क्राफ्ट, तमिलनाडु तंजावुर पेंटिंग्स, मध्य प्रदेश ट्राइबल स्कल्पचर. तो ये हमें एग्जाम्पल्स दिए. सारे रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो श्योरली नहीं कह सकते विद द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो ऑल इज एक्सट्रीम टू ब्रॉड. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 4 भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट कंक्लूड दिस कि ऑल रीजन्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? क्वेश्चन पूछा कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है. ऑप्शन ए, पेंटिंग्स फ्रॉम 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन मेंशन्ड. ऑप्शन बी, स्टेपिंग इनटू कलाग्राम इज लाइकेंड टू स्टेपिंग इनटू अनदर वर्ड. और स्टेटमेंट बी तो हमारा डायरेक्टली मेंशन्ड है, स्टेपिंग इनटू अनदर वर्ड. तो यस, दिस इज करेक्ट. और क्योंकि करेक्ट है तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज आंसर तो वो होगा जो कि करेक्ट नहीं होगा. ऑप्शन सी, आंगन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज लिविंग गैलरीज. दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर नहीं होगा. ऑप्शन डी, कलाग्राम इज डिवाइडेड इनटू थीमेटिक जोन्स इंस्पायर्ड बाय वेल नोन टेम्पल्स ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड एंड इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन ए कह रहा था पेंटिंग्स फ्रॉम 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जबकि हमें पैसा जो मेंशन्ड है बंगाल्स पट्टचित्र पेंटिंग्स एंड देन तमिलनाडु तंजावुर पेंटिंग्स. So there are only 2 states for which paintings are mentioned, not 4. So that would be the answer because this statement is incorrect. Okay, simple straightforward passage था. Next passage पे चलते हैं. And there are 2 questions that follow this passage. Sport is not just about winning medals or getting jobs through a sports quota. Today's generation is struggling with issues like depression and anxiety. Parents often say that their children are inactive and rarely leave the house. Sport can help tackle these problems. From sport, you can learn time management, fitness, teamwork, coordination, and so much more. We need to develop a culture in which sport is seen as a way of life, a path to building a healthier, happier society.
So this is the basic crux of the passage. ये sport है that is more than winning medals or getting jobs, and that can also help you in struggling with issues like depression, anxiety, and apart from that, it can also help you in time management, fitness, teamwork, coordination, etc. So, which of the following conclusions are valid? और फिर हमें 4 conclusions given है. First one, sport is more than just games; it is a way of life. तो साफ साफ लिखा है, sport is seen as a way of life. To develop a culture in which sport is seen as a way of life. So yes, this is correct. Second one, sport can help mitigate the problems of seclusion among the young. Seclusion. तो उसके लिए mentioned here, parents always say that their children are inactive and they rarely leave the house, and sport can help tackle these problems. They rarely leave the house and sport can help tackle these problems. So yes, second is also correct. फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और यानी कि हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट और सेकंड दोनों होने चाहिए. ओके. थर्ड वन, अर्निंग लॉरेल्स इन स्पोर्ट कैन हेल्प वन सिक्योर अ जॉब ऑन द बेसिस ऑफ अ असाइंड कोटा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेट अवे. स्टेटमेंट नंबर 4, स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर स्किल्स कैन नॉट बी लर्न. कैन नॉट बी लर्न, तो हमारा कहीं पर भी पैसेज ये नहीं कह रहा कि सीखी नहीं जा सकती. इनफैक्ट मेंशन भी है कि टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क एक्सेट्रा. ठीक है. सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो मेंशन, बट अदरवाइज ऑल्सो कहीं पे अगर ये नहीं भी मेंशन होता तो भी ये स्टेटमेंट ये तो नहीं कह रहा कि ये सीखा नहीं जा सकता. जो सीखा जा सकता वो बताया, बट निगेशन तो नहीं किया क्या नहीं सीखा जा सकता. दैट इज वाई 4 इज इनकरेक्ट एनीवे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. तो स्टूडेंट नंबर 1, पेरेंट्स आर नॉट इनकरेजिंग इनफ व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन प्लेइंग स्पोर्ट. अब कहीं पे भी पैसेज हमारा मेंशन नहीं कर रहा, दिस इज नॉट मेंशन दैट पेरेंट्स आर नॉट इनकरेजिंग देयर children. So that is not mentioned and hence this is not correct. Second one, participation in sporting activities can help develop life skills. So yes, that is right. That is a correct statement. यही तो सारी कहानी लिखी है, लाइफ स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, फिटनेस, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा. स्पोर्ट एज अ वे ऑफ लाइफ कैन हेल्प इवॉल्व द वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज डायरेक्टली मेंशन किया है पैसेज में, या पाथ टू बिल्डिंग अ हेल्थियर एंड हैप्पियर सोसाइटी. तो सेकंड थर्ड बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट इज ऑन डिफ्लेशन. Then 2 questions are asked on the concept of deflation. Read करते हैं इसको. How is deflation done? Most countries use a method called double deflation. Double deflation और definition क्या given है? Double deflation is where input and output prices are deflated separately. Separate deflation जहाँ पे हम काउंट करें input और output prices में, so that is called double deflation. Consider a manufacturer importing oil for use in production. If oil prices fall, output prices do not and quantities remain the same. Oil के prices fall किए, आउटपुट प्राइसेस फॉल नहीं किए, क्वांटिटी सेम है, तो रियल वैल्यू एडेड शुड नॉट चेंज. दैट शुड नॉट चेंज. बट इफ द सेम डिफ्लेटर इज यूज्ड फॉर इनपुट एज वेल एज आउटपुट, इन दैट केस एज इन इंडिया, इंडिया इज यूजिंग सेम डिफ्लेटर फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट. बट अदरवाइज डबल डिफ्लेशन क्या है? मेनी कंट्रीज आर यूजिंग डबल डिफ्लेशन एंड इन दैट we are using separate deflators for input and output. But in India, it would look as if the manufacturer had become more productive because of using the same deflation. Because using the same deflation. So that is the passage. Which of the following statements are correct? Statement 1, real value should not change in an instance of static output cost and unchanged quantities against falling oil prices. तो अगर oil prices फॉल किए हैं, but हमारा output cost same है, यही बात तो मेंशन किया है पैसेज में. And quantities remain the same, so real value added should not change. Real value should not change. Yes, this is correct. ठीक है. Second one, deflators are to be used separately for inputs and outputs, and this is a practice universally adopted by all economies. तो yes, ये जो पहला पार्ट हमारा मेंशन है, ये तो कह रहा है डबल डिफ्लेशन के बारे में. बट इज दिस प्रैक्टिस यूनिवर्सली अडॉप्टेड बाय ऑल इकोनॉमीज? नो, इट इज नॉट. इवन इंडिया भी यूज नहीं करता इसको, सेम प्रैक्टिस को. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारा. फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following assumptions are valid? First assumption, deflation strategies can be used to make manufacturers appear to be doing better than they actually are. और हमारा ऐसे साफ साफ बोल रहा है कि in context of India, if same deflator is used for input as well as output, so in that case it would look as if the manufacturer had become more productive. So yes, deflation strategy can be used to make manufacturers appear to be doing better than they actually are doing. Second one, when input and output prices are both deflated against a single input price, it is referred to as double deflation. No, this is not. डबल डिफ्लेशन में तो सेपरेट डिफ्लेटर यूज होता है. दिस इज नॉट डबल डिफ्लेशन. तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है. अगेन ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट पैसेज,
Now this passage has total 3 questions. तो पॉज करके पहले अपने एंड को read the passage and solve these questions. When SARS-CoV-2 was first detected in 2019, it was a truly novel virus for the world. At that time, no one in the world had been exposed to SARS-CoV-2 or had specific immunity against it. In contrast, people across the world have been exposed to HMPV for decades, and the virus is well studied. HMPV and SARS-CoV-2 belong to two very different virus families with fundamentally different characteristics and epidemiology, with strong seasonality seen in HMPV, unlike SARS-CoV-2. Both viruses cause different severity of symptoms, particularly over the long term, and the affected population segments do not fully overlap. In general, HMPV causes milder illness, with deaths being very rare and with no long-term post-viral symptoms. So this is the whole passage. Basically पूरे पैसेज में ऑथर ने क्या बताना चाहे, डिफरेंसेस बिटवीन SARS-CoV-2 एंड HMPV वायरस. Isn't it so? अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर वैलिड. फर्स्ट कंक्लूजन, तो SARS-CoV-2 एंड HMPV आर सिमिलर वायरसेस. स्टार्ट में ही गलत कर दिया, स्टार्ट में एरर कर दिया. सिमिलर वायरसेस, दे आर नॉट सिमिलर वायरसेस. साफ साफ पैसेज हमारा कह रहा है दे आर टू डिफरेंट, दे बिलोंग टू टू वेरी डिफरेंट वायरस फैमिलीज. They are not similar. They have fundamentally different characteristics, and epidemiology is also different. So they are not similar. First conclusion is not correct. Okay. Second one, the two viruses have fundamentally different impacts on human population and should not therefore be dealt with in a similar manner. क्या ये conclude कर सकते हैं? The two viruses have fundamentally different impacts on human population and should not therefore be dealt with in a similar manner. Isn't it so? So this seems logical क्योंकि different impact है, different viruses हैं, different characteristics है, different epidemiology है, different impact तो है ही है, साथ में एंड में बता ही रहा है, और लॉन्ग टर्म में भी, और बाकी तो डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस हैं. तो डेफिनेटली दे शुड नॉट बी डेल्ट विद इन द सिमिलर मैनर. यस, सेकंड कंक्लूजन सीम्स करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following reflect the intent of the writer in the above passage? These statements again, which of the following comprise the intent of the author? Statement number 1, to evolve methodologies for objective analysis of the two viruses. To evolve methodologies, अब कहीं पे methodology का mention तो नहीं है, बट इसको होल्ड पे रखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट, टू एस्टैब्लिश द एपिडेमियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू वायरसेस. तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी सिमिलैरिटीज मेंशन नहीं किया गया. नो सिमिलैरिटीज आर मेंशन. डिफरेंसेस तो मेंशन किए हैं बट सिमिलैरिटीज कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट because there is no mention whatsoever of any similarities. Third one, to offer a better understanding of the remedies of HMPV when analyzed in conjunction with SARS-CoV-2. Better understanding of the remedies. तो कहीं पे भी remedies भी mention नहीं किया है. No remedies are mentioned. थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया. यानी कि हमारा ना तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ना बी होगा, ना सी होगा. तो क्लियरली ऑप्शन डी आंसर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है. ठीक है, हालांकि मेथोडोलॉजी के बारे में भी एज सच डायरेक्टली बात तो नहीं किया गया, तो दैट शुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट. बट वो करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, हमारा ऑप्शन डी ही आंसर होगा फॉर श्योर, बिकॉज सेकंड थर्ड फॉर श्योर इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements reflect the logical and rational inferences that can be drawn from the passage? Logical and rational inferences from the passage. Four statements are there. First one, HMPV has historically had longer documentation of studies when compared with SARS-CoV-2. तो साफ साफ मेंशन क्या कर रहा है पैसेज हमारा कि वर्ल्ड हैज बीन एक्सपोज टू HMPV for long time, for decades, and the virus is well studied. So yes, there is a long documentation. तो longer documentation है, first correct है. Second one, two viruses are different from each other and this results in markedly different outcomes amongst those affected. तो yes, different भी हैं और outcomes भी different आते हैं. तो second statement is also incorrect. Third one, long-term impact of the two viruses are dissimilar. Yes, that is also mentioned that both viruses cause different severity of symptoms, particularly over the long term. So yes, this part is correct, that they are dissimilar in the long term and this is an important differentiator between them. So yes, that is also correct. Third भी correct है हमारा. ठीक है, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी, थर्ड भी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. लास्ट वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द टू वायरसेस इज सीजनल स्पेसिफिसिटी. अगेन यहाँ पे क्या करा, कॉमन फैक्टर, बट हमें कॉमन फैक्टर तो कहीं पे बताया ही नहीं है, बताई है सारी जगह डिफरेंसेस. और सिविरिटी के बारे में, सीजनल स्पेसिफिसिटी के बारे में भी डिफरेंस ही बताया है कि अफेक्टेड पॉपुलेशन कहाँ पे गया. हाँ, ये स्ट्रॉन्ग सीजनैलिटी हैज बीन सीन इन HMPV अनलाइक SARS-CoV-2. तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, बाकी सारे के सारे करेक्ट है हमारे. ओके, तो इजी पैसेज,
हाँ, एक दो क्वेश्चन में कहीं पे एक क्वेश्चन में अटक सकते थे, अदरवाइज दिस वाज आल्सो डायरेक्ट पैसेज, इजंट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज ऑन एआई, use of AI in agriculture. India is starting to deploy AI for critical use cases such as weather forecasting, pest detection, critical use, AI for critical use for weather forecasting, pest detection and control, and crop yield optimization. However, penetration is limited to a small subset of tech-savvy farmers. In the US and the Europe, generative AI tools have started offering precision farming at scale, integrating large datasets to provide real-time agronomic insights. For at-scale integration and accessibility of AI tools in India, it would be helpful to develop Indian language-based AI tools for smallholder farmers, partner with agtechs to create affordable AI solutions, and disseminate AI-based advisory services through government programs. That is the passage on use of AI for agriculture in India with affordability as well. Okay? Which of the following assumptions are valid? So three assumptions are given. First one, agriculture productivity has marched ahead in the West because of economies of scale facilitated by the adoption of AI tools. तो क्या पैसेज हमारा मेंशन कर रहा है कि whether West has marched ahead in agriculture productivity or not? That is not mentioned. Also, economies of scale is nowhere mentioned in the passage. Passage mention कर रहा है हमारा about precision farming at scale. ठीक है, तो we cannot conclude first statement. ठीक है, सेकंड वन, अफोर्डेबल एआई टूल्स रेंडर्ड अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेजेस कैन हेल्प एआई बेस्ड सॉल्यूशंस रीच मोर एंड मोर स्मॉल फार्मर्स. यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि साफ साफ पैसेज हमारा मेंशन कर रहा है टुवर्ड्स द लास्ट अबाउट अफोर्डेबल एआई टूल्स इन लोकल लैंग्वेजेस. थर्ड वन, दो पेनिट्रेशन इज एज yet low, critical application areas deploying AI tools are already in use in India. This is also correct because साफ साफ पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है India is starting to use deploy AI for critical use cases such as weather forecasting, etc. And penetration is limited to a small subset of tech-savvy farmers. So second and third are correct. Option D will be the answer. Okay, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट. क्वेश्चन पूछा कौन से स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट नहीं है, वो आंसर होंगे. फर्स्ट वन, टेक सेवी फार्मर्स विल ड्राइव द एगटेक कंपनीज ऑफ द फ्यूचर. तो स्टेटमेंट हमारा पैसेज हमारा यूज तो कर रहा है टेक सेवी फार्मर्स के बारे में, बट क्या बात की थी, पेनिट्रेशन इज लिमिटेड टू अ स्मॉल सबसेट ऑफ टेक सेवी फार्मर्स, बट विल दे ड्राइव एगटेक कंपनीज ऑफ फ्यूचर और नॉट? दैट इज नॉट मेंशन. तो दिस इज नॉट करेक्ट. अब क्योंकि नॉट करेक्ट है तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द आंसर. आंसर का पार्ट तो होगा बिकॉज दैट इज नॉट करेक्ट, है कि नहीं? तो फर्स्ट हमारा आंसर का पार्ट होगा. सेकंड वन, द डेवलपमेंट ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर द यूज ऑफ एआई टूल्स इन एग्रीकल्चर वुड बी हेल्पफुल. यस, दिस इज करेक्ट, और क्योंकि ये करेक्ट है तो दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द आंसर. वन होगा पार्ट ऑफ द आंसर, टू नहीं होगा. टू नहीं होगा तो ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा बिकॉज वन शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर, क्योंकि वन इनकरेक्ट है हमारा. दैट इज वाई. ठीक है, और फिर स्टेटमेंट थ्री, इन द यूएस एंड यूरोप एआई टूल्स हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. कहीं पे पैसेज ये मेंशन कर रहा है कि एआई टूल्स हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये तो मेंशन नहीं कर रहा है ना. ठीक है, सो दे कैन ऑल्सो बी इन प्रैक्टिस, और अदरवाइज एआई टूल्स ने एडिशनली हेल्प किया हो प्रेसिजन एट स्केल पे. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड हेंस पार्ट ऑफ द आंसर होगा, यानी वन एंड थ्री विल बी पार्ट ऑफ द आंसर. और वैसे भी ए और बी बच गए थे तो वन एंड थ्री तो पार्ट ऑफ आंसर होना ही था, फोर को ही चेक करना था. इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज डेटा सेट्स फॉर यूज इन रियल टाइम एग्रोनॉमिक एनालिसिस इज ऑलरेडी अ रियलिटी. इज दैट अ रियलिटी और नॉट? दैट इज अ रियलिटी, at least in US and Europe, integrating large datasets to provide real-time agronomic insights. So yes, this is a reality. This is a correct statement, and hence answer का part नहीं होगा. So 1 and 3 will be the answer, option A. Okay. Next question. Next passage, or passage is based on two questions. Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act, or the JJ Act 2015, allows for the possibility for trying adolescents above 16 as adults if they are accused of committing a heinous offense. A heinous offense is one with a minimum punishment of 7 years. Offenses such as culpable homicide and causing death by negligence, which are common in drunken driving cases, are not heinous offenses because they do not have a prescribed minimum punishment. Okay. तो JJ Act 2015 क्या बात कर रहा है हमारा, यहाँ पे डिफाइन क्या किया है हमें, हेनस ऑफेंसेस डिफाइन किए. हेनस ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस विच हैव अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 years. ग्रेटर देन 7 years का मिनिमम पनिशमेंट हो,
And for these punishments, for these particular crimes or offenses, adolescent above 16 can be treated as an adult if they are accused of committing such a crime. Next, offenses such as, ठीक है हो गया ये, इसके बाद में क्या है हमारा, द जेजे एक्ट amended in 2021 now categorizes an offense that has no minimum sentence but has a maximum sentence of 7 years or more as a serious offense, which nonetheless, in the opinion of activists, does not merit the transfer of a case to the adult criminal justice system. यानी कि JJ Act 2021 after amendment, that is also defining serious offenses. And serious offenses are those offenses जहाँ पे कि minimum क्या है, minimum is not prescribed, minimum should be not prescribed. ठीक है, no minimum sentence, जीरो नहीं, minimum is no prescription for a minimum sentence. ठीक है, और maximum value क्या होगा, maximum can be 7 years or more. ओके, फिर स्टेटमेंट मेंशन है हमारा. अब देखो जो हमारा पैसेज बात कर रहा है, पैसेज दो चीजें कह रहा है. एक तो जेजे एक्ट 2015 में हिनेस ऑफेंसेस डिफाइन किया था. जेजे एक्ट 2021 में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के साथ में एडिशनली सीरियस ऑफेंसेस को भी डिफाइन कर दिया. तो हिनेस ऑफेंसेस तो है ही है, साथ में एडिशनली सीरियस ऑफेंस को भी डिफाइन कर दिया. इजंट इट सो? ये हमारा पैसेज मेंशन नहीं कर रहा है कि सीरियस ऑफेंसेस के लिए भी सेम ट्रीटमेंट होगा जो हिनेस ऑफेंसेस के लिए हुआ है. बस इतना मेंशन कर रहा है कि फॉर सीरियस ऑफेंसेस इन द ओपिनियन ऑफ एक्टिविस्ट्स these does not merit the transfer of a case to the adult criminal justice system. ओके, बट इनके लिए एडिशनली मेंशन किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज आर वैलिड? तो फर्स्ट कंक्लूजन, ओनली अ सीरियस ऑफेंस एज कैटेगराइज्ड बाय द रिवाइज्ड जेजे एक्ट जस्टिफाइज द ट्रांसफर ऑफ अ केस टू द एडल्ट जस्टिस सिस्टम, एडल्ट जुडिशियल सिस्टम. तो पहली चीज तो ये कहा ही नहीं है कि सीरियस ऑफेंस है तो दैट जस्टिफाइज द ट्रांसफर ऑफ अ केस टू द एडल्ट जस्टिस सिस्टम, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज. दैट इज फर्स्ट थिंग. ऑल्सो सेकंड थिंग कि ओनली वाला पार्ट तो वैसे भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ऑलरेडी हिनेस ऑफेंसेस आर देयर. और हमारा क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि 2021 वाले जेजे एक्ट में हिनेस ऑफेंसेस तो रिमूव कर दिया है, ऐसा तो नहीं कहा ना. तो हिनेस ऑफेंसेस ऑलरेडी हैं, उनके लिए तो पहले से ही प्रोविजन बना हुआ था. सीरियस ऑफेंसेस एडिशनली ऐड किए गए, तो ओनली वाले पार्ट की वजह से दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. अदरवाइज ऑल्सो दिस वॉज नॉट मेंशन. ठीक है. सेकंड वन, द जेजे एक्ट 2021 categorizes an offense as a serious offense based on the maximum sentence it carries rather than on the minimum sentence. तो yes, that is true, क्योंकि मिनिमम सेंटेंस होना नहीं चाहिए, बट डिफाइन किस बेसिस पे किया है कि मैक्सिमम सेंटेंस शुड बी ग्रेटर देन 7 years. ठीक है. यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो डेफिनेशन के दो पार्ट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है. हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर के सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, टू ओनली. बट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये क्वेश्चन मेंशन करता, सेकंड वाला स्टेटमेंट मेंशन करता कि कैटेगराइज ऑफेंस एज अ सीरियस ऑफेंस बेस्ड ऑन ओनली द मैक्सिमम सेंटेंस इट कैरीज, ओनली, अगर ओनली भी एडिशनली मेंशन होता तब सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता, बिकॉज सीरियस ऑफेंस का डेफिनेशन क्या है, दैट मिनिमम सेंटेंस शुड नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड एंड मैक्सिमम सेंटेंस शुड बी ग्रेटर देन 7 years. दोनों कंडीशंस हैं, बट डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमम सेंटेंस शुड बी ग्रेटर देन 7 years, मिनिमम सेंटेंस होना नहीं चाहिए. ठीक है, यानी कि मिनिमम का तो निगेशन है कि वो नहीं होगा, पर किस बेसिस पे सीरियस ऑफेंस होगा कि मैक्सिमम सेंटेंस शुड बी ग्रेटर देन 7 years. अगर 7 years से लेसर होगा मैक्सिमम सेंटेंस और मिनिमम सेंटेंस नहीं होगा, इन दैट केस दैट विल नॉट बी अ सीरियस ऑफेंस. तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हम डिफाइन किसके बेसिस पे करें, सीरियस ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन मैक्सिमम सेंटेंस, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. देयर इज अनदर निगेशन पार्ट, दैट इज मिनिमम सेंटेंस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं. तो वो भी पार्ट है इन डेफिनेशन, तो दोनों पार्ट इंक्लूडेड है, बट यस हैज बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन मैक्सिमम, बट ओनली ऑन मैक्सिमम नहीं है. तो दैट इज वाई अगर ओनली भी मेंशन होता तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो जाता, बट अदरवाइज दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? First, if an offense has no minimum prescribed punishment, it cannot be considered heinous as per the JJ Act 2015. Offense has no minimum prescribed punishment. Yes, that is true. Because condition ही हमारा JJ Act 2015 के अकॉर्डिंग कि heinous कौन सा होगा offense जहाँ पे कि minimum हमारा 7 years से ज़्यादा का होगा minimum punishment. So this is definitely correct. Second, as per the JJ Act 2021, an offense for which there is a provision for a maximum sentence of 7 years or more, but no minimum sentence is to be considered a serious offense. Serious definition, proper definition, दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट डायरेक्टली मेंशन है. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैसेज and then two questions on the passage. The key source of the battle for clean skies and clear lungs is the fuel we burn, from household chulhas to the thermal power plants. In most cases, it is biomass or coal. The Supreme Court banned the use of the pet coke, the dirtiest of such fuels. The Delhi government banned the use of coal, which was later extended to the NCR region, entire NCR region, entire National Capital Region. It was also agreed that the thermal power plants would clean up or shut down. Actions on this has been patchy, to say the least. A lesson from
The transition to CNG is that people need alternatives for a ban to be effective. When diesel buses were stopped, CNG supply had to be assured. It also has to be feasible in terms of cost. यानी कि पहली चीज तो ये है कि अगर एक चीज को बैन कर रहे हैं तो वी शुड हैव एन अल्टरनेटिव मस्ट बी देयर. ठीक है, तो बैन के बाद में देयर मस्ट बी अल्टरनेटिव. एंड सेकंड थिंग इज दैट अल्टरनेटिव मस्ट बी अफोर्डेबल ऑल्सो. ठीक है, अगर अल्टरनेटिव हुआ बट अफोर्डेबल नहीं हुआ तब भी फिर बैन हमारा काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, इट ऑल्सो हैड टू बी feasible in terms of cost. Supreme Court agreed that fiscal measures were needed to keep clean fuel cheaper than the dirty fuel. Now, even as coal is banned, the price of natural gas makes industry uncompetitive. Okay, so ban करने की बात की, pet coke has been banned by Supreme Court, coal has been banned by Delhi government, and finally extended to national capital region. And apart from that, if we are banning something, then we should have alternative, and that alternative should also be affordable. The first question: which of the following inferences are correct? The source of the energy we consume is the key to the battle of clean energy. Same बात mentioned है, तो yes, this is correct. Source of the energy we consume is the key to battle for clean energy, because otherwise source of energy ही हमारा ऐसा है जो कि dirty fuel है, so that will definitely cause pollution and the air will not be cleaner. Second one, bans are effective where the will is strong and the people are convinced that such bans are for the greater good of society. क्या ये हमारा गिवन पैसेज के हिसाब से करेक्ट होगा? इन जनरल सोचो तो करेक्ट लग सकता है, बट क्या पैसेज के हिसाब से करेक्ट होगा? पैसेज तो कहीं पर भी ना तो विल की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग विल की बात कर रहा है, ना ही ये कह रहा है कि बैन शुड बी गुड फॉर सोसाइटी, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा. इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर बैन करना है तो अल्टरनेटिव हमारा होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए अल्टरनेटिव. बट कहीं पर भी हमारा सेकंड स्टेप में उसकी बात तो कर ही नहीं, बात कर रहा है स्ट्रॉन्ग विल होगा तो बैन इफेक्टिव होगा, गुड फॉर सोसाइटी होगा बैन इफेक्टिव होगा, तो दैट इज नॉट करेक्ट. बैन तभी इफेक्टिव होगा जबकि एक अल्टरनेटिव होगा और वो अल्टरनेटिव अफोर्डेबल होगा. थर्ड वन, there is a judicial approval for a policy that intervenes fiscally to facilitate benevolent pricing for cleaner fuel. So yes, this is correct. The first and third is correct. Option C आंसर हो जाएगा. Okay. Next, which of the following statements is are correct? First statement, thermal power stations in Delhi were required to summarily shut down. तो क्या शटडाउन करने की सिर्फ बात की थी? शटडाउन करने का स्टेटमेंट था, बट स्टेटमेंट हमारा कह रहा था इट वाज आल्सो एग्रीड दैट थर्मल पावर प्लांट्स वुड क्लीन अप और शट डाउन. तो या तो क्लीन अप करें या फिर शट डाउन हो जाए. तो शट डाउन वाज वन चॉइस इफ दे आर नॉट क्लीनिंग अप, बट दिस वाज नॉट द ओनली चॉइस. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सेकंड वन, सीएनजी सप्लाईज हैड टू बी अश्योर्ड वंस डीजल व्हीकल्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम फ्लाइंग. तो यस, दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. ठीक है. थर्ड वन, द सुप्रीम कोर्ट बैंड द यूज ऑफ कोल अक्रॉस द नेशनल कैपिटल रीजन. अगेन क्या फंसाने की कोशिश की यहाँ पे एग्जामिनर ने? सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है कोक, पेट कोक, और दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन किया था कोल. So this statement is also incorrect. Option C is the answer, 2 only. Okay. Next passage with 2 questions. Previous waves of customer service technology, including email and those pesky voice menus, stoked concerns of job losses, only for them to fail to materialize. AI could yet prove different, and if it does, its effects may be salutary. Human agents could be freed up to spend more time on creative and rewarding tasks, like using feedback to make products and services better, and thereby spend less time listening to irate consumers. Okay, which one of the following statements most appropriately reflects the point of view of the given passage? Point of view of the given passage. Option A, if AI were to take over customer service, there would be no work left for human subjects to do. क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं? Is this the most appropriate? No, this is not. ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन एजेंट कुड बी फ्रीड अप टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्रिएटिव एंड रिवार्डिंग टास्क्स. दैट इज पॉजिटिव, इजंट इट? सो नो वर्क लेफ्ट होगा. दैट इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी, इरिटेटिंग वॉइस मेन्यूज एंड ईमेल कुड नॉट अचीव ह्यूमन रिडेंडेंसी टू द एक्सटेंट दैट एआई माइट. ये भी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, तो नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी, वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन द वर्क प्लेस अफेक्टेड बाय एआई माइट बी इनहेंस्ड through redirection towards more fulfilling tasks. Yes, that is given on creative and rewarding tasks. So yes, C seems to be the correct answer. Option D कह रहा है, unlike previous waves in customer service technology, AI has raised the alarm for worker replacement. तो पहले भी के जो हमारे जितने भी customer service technology में अपडेट्स आए थे वहाँ पे भी there was an alarm, there were concerns of job losses. So unlike mentioned है, that is why this is not correct. वैसे भी ऑप्शन सी हमारा आंसर तो आ ही रहा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conclusions made on the basis of the given passage are correct? Second one, advent of new customer service technology had invariably sparked fears about job losses. क्या ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? Advent of new customer service technology had invariably, यानी कि without exception, always sparked fears about job losses. तो as per the given line, देखो लग तो रहा है कि एक्सट्रीम हो गया, बट हमारा लाइन क्या कह रहा है, स्टार्ट क्या कह रहा है पैसेज का? प्रीवियस वेव्स ऑफ कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ईमेल्स एंड दोज पेस्की वॉइस मेन्यूज स्टोक्ड कंसर्न्स ऑफ जॉब लॉसेस.
तो हमारा पैसेज का फर्स्ट लाइन साफ साफ ये कह रहा है कि प्रीवियस जितने भी वेव्स आए हैं कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी के, दोज हैव स्टोक्ड कंसर्न्स ऑफ जॉब लॉसेस, isn't it so? So yes, this statement seems to be correct because of the passage. Second one, often it is found that instead of job losses, alternative channels for employee engagement are discovered while certain tasks are replaced by technology. So yes, this is also correct because job losses हुए ही नहीं most of the cases only for them to fail to materialize. So AI could prove different and so on. फिर mention है तो second statement seems to be correct also. Third one, advent of technology inevitably leads to stressful outcomes. क्या ये correct है? पैसेज ने कहीं पे भी स्ट्रेसफुल आउटकम्स की बात नहीं की है, कंसर्न की बात की है, बट स्ट्रेसफुल आउटकम आए नहीं। कंसर्न था जॉब लॉस होगा, बट जॉब लॉस हुआ नहीं हुआ, दोज फेल टू मटेरियलाइज, लेकिन जॉब लॉस एक्चुअल में नहीं हुआ, तो स्ट्रेसफुल आउटकम नहीं आया। स्ट्रेस आया हो सकता है, आउटकम वॉज नॉट स्ट्रेसफुल। ठीक है, सो दैट इज वाई थर्ड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ऑप्शन डी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पैसेज। नाउ ये जो पैसेज है नेक्स्ट हमारा, दिस इज फ्रॉम गोदान by Premchand. Cattle from the nearby villages came to the common ground to graze, and there was still a cool freshness in their air. Hori took several deep breaths and thought of sitting down for a while, since he'd be dying of heat in the scorching wind the rest of the day. A number of farmers were eager to lease this bit of land and had offered a very good price, but Rai Sahab, God bless him, had plainly told them it was reserved for grazing and would not be relinquished for any price. If he had been one of those selfish jamidars, he'd have said the cattle can go to hell, cattle could go to hell, that there was no reason for him to miss the chance to make a little money. But the Rai Sahab still held to the old values, feeling that any landlord who did not look after his tenants was less than human. Okay, which of the following conclusions are correct based on the passage? Passage हमारा क्या कर रहा है कि cattle from nearby villages came to the common ground to graze, and then apart from that फिर mention कर रहा है कि there are a number of farmers who were eager to lease this bit of land and had offered a good price, but Rai Sahab had plainly denied them for that because it was reserved for grazing and would not be relinquished for any price whatsoever. If he was selfish, he would have definitely given that land for some money, but Rai Sahab still held to the old values, and that is why he was feeling that any landlord who is not looking after his tenants was less than human. Okay, which of the conclusions are correct? First statement, all landlords essentially have some goodness tapped in them. क्या ये करेक्ट है? ऑल के बारे में बात कर रहा है क्या हमारा पैसेज? नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट हो गया। द कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ अ विलेज आर इंटेंडेड फॉर यूज बाय द कैटल ऑफ दैट विलेज। अब ये थोड़ा सा पिकी ऑप्शन है हमारा। क्यों पिकी है अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसको। थर्ड वन, लैंडलॉर्ड्स हु बिलीव इन ट्रेडिशन टेंड टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर टेनेंट्स। इज दिस ट्रू? एज पर द पैसेज इट इज, बिकॉज पैसेज कह रहा है राय साहब स्टिल हेल्ड टू द ओल्ड वैल्यूज, फीलिंग दैट एनी लैंडलॉर्ड who did not look after his tenants was less than human. Old values क्या है हमारी? That a landlord looks after his tenants. ठीक है, so yes, landlords who believe in tradition tend to be more concerned. Tend to be कहा है, always नहीं कहा है, tend to be more concerned about the tenants. So yes, this is correct. Third one correct है, लेकिन third one should be part of the answer. यानी कि ऑप्शन बी या फिर डी आंसर नहीं होगा, और थर्ड हमारा आंसर होगा। तो क्लियर सी बात है कि फिर हमारा टू वैसे भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है टू? क्योंकि हमारा पहला लाइन ही कह रहा है कैटल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस केम टू द कॉमन ग्राउंड फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, तो नियर बाई विलेजेस से भी ग्रेज करने के लिए आ रहे हैं कैटल, यानी कि दिस इज नॉट अबाउट टू बी यूज्ड बाय द कैटल्स ऑफ दैट विलेज ओनली। ठीक है, दैट कॉमन ग्राउंड इज ऑल्सो यूज्ड बाय नियर बाई विलेजेस, दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फोर्थ वन, winds later in the day tend to be cooler post the hot winds of the morning। जबकि ये साफ साफ हमारा पैसेज कह रहा है कि he would be dying of heat in the scorching wind the rest of the day, so this statement is also incorrect. Third is the only one that is correct, option C will be the answer. Okay, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? Statement 1, the land holdings of Rai Sahab were currently not being used for farming। क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? अब ये जो एक लैंड होल्डिंग की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, जहाँ पे कि दैट इज कॉमन ग्राउंड टू ग्रेस, तो दैट इज ओनली वन लैंड होल्डिंग। क्या उतना ही लैंड है राय साहब के पास में? वी कैन नॉट कंक्लूड दैट फ्रॉम द गिवन पैसेज। ठीक है, दिस बिट ऑफ लैंड, यहाँ से इतना तो कंक्लूड नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट से दैट। और क्योंकि नहीं कह सकते हैं तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द आंसर, इनकरेक्ट है, तो दैट इज वाई पार्ट ऑफ द आंसर होगा। सेकंड वन, temperamentally Rai Sahab was as greedy as other landlords. As per the passage he is not, so this is also incorrect, because second will also be part of the answer.
थर्ड वन, इट कैनॉट बी असर्टेंड दैट राय साहब कुड हैव मेड सम मनी बाय लीजिंग आउट द ग्रेजिंग लैंड। क्या ये असर्टेन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि हमारा पैसा साफ साफ बोल रहा है कि दे हैड ऑफर्ड अ गुड प्राइस, isn't it so? So yes, this can be ascertained and hence this is also incorrect and hence part of the answer होगा 1 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्थ वन, इट मे बी asserted that Rais have valued his tenants and wanted to protect their livelihood। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज वाई पार्ट ऑफ द आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पैसेज। Was it the sun-dappled ambience, the strawberries and cream, the frustration of Flavio Cobolli's unforced errors against Serbian Novak Jovic on center court, or simply the crushing weight of being a 64-year-old man in the third act of a very public life? Whatever the reason, Hugh Grant, the actor, deserves empathy. There he was in the royal box of Wimbledon, flanked by Britain's well-dressed and well-rested spectators watching the men's singles quarterfinals, when the actor did something quietly radical. Head at a tilt, eyes closed, utterly unbothered, he took a nap. So praise be to Grant for serving up an unexpected ace. In that small, delicious moment, he didn't merely catch 40 wings, he made an elegant case for surrender. Not to laziness, but to limits. To the body's quiet wisdom over society's relentless performance metrics. Wimbledon had its tennis, the perpetually sleep-deprived discovered a leading man, not of action, but of rest. Okay, which of the following statements are correct? First one, radical action can also be attributed to mild surrender where one acts against societal expectations। क्या ये हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा? क्योंकि हमारे पैसेज में रेडिकल एक्शन की बात की जा रही है, बट कौन सा रेडिकल एक्शन? पैसेज कह रहा है ना, when the actor did something quite radical। और क्या है रेडिकल? बिकॉज ही सरेंडर्ड, ही टुक अ नैप। ठीक है, he took a nap. Unexpected is delicious moment. He made an elegant case for surrender, not to laziness but to limits. So yes, radical action can also be attributed to mild surrender, where one acts against societal expectations. So that is correct as per the passage. Second one, submitting to one's limitations, given the effect of age and other factors, ought not to be conflated with laziness. Conflated यानी कि combined with laziness. तो हमारा पैसेज साफ साफ मेंशन कर रहा है कि this is not because of laziness, not to laziness, but to limits. Because of the limits of the body. He took a nap because of the limits of the body, not because of laziness. Yes, this should not be conflated with laziness, so this is also correct. Third one, leading man usually refers to one who plays the lead role in a movie. In this instance, the implication is that Hugh Grant is performing the role of not an action hero, but that of a resting one. Okay, not of action, but of rest. Discovered a leading man. That is also mentioned clearly. The third is also correct. 1, 2 and 3 all are correct. Option C हमारा आंसर हो जाएगा. All of them are correct. Next one, which of the following statements are correct? Again, 3 statements हमें given है. So Hugh Grant was watching from the royal box the men's semi-final match on center court between Flavio Cobolli and Novak Jovic. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे फंसाया है क्या? सेमीफाइनल मेंशन किया, जबकि दिस वाज अ क्वार्टर फाइनल मैच, singles quarterfinals. So this is not correct. The phrase unexpected race in the context uses a term from the game of tennis to highlight Hugh Grant's somewhat uncharacteristic act of catching 40 wings, an act that is viewed with opprobrium. अब opprobrium ये वर्ड प्रॉब्लम कर सकता है, बट अगर एग्जाम में तुमने ये वर्ड देखा होगा तो आई होप कि तुमने इसका हिंदी वर्जन भी जरूर देखा होगा। तो हिंदी में इसके लिए अपकीर्ति मेंशन, अपकीर्ति, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग रिडिक्यूल, बेसिकली क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। अब क्या पैसेज को पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि पैसेज में कहीं पे भी ऑथर ने स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म की बात की है? पैसेज में तो कहीं पे भी बात नहीं की, पैसेज में तो अप्रिशिएट किया इनफैक्ट बहुत हद तक, इजंट इट सो? तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है? कंक्लूड तो नहीं किया जा सकता एज पर द पैसेज, एज पर द पैसेज। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस सेकंड स्टेटमेंट शुड नॉट बी करेक्ट। एन एक्ट दैट इज यूज्ड विद अप्रोप्रियम, तो क्या ये एक्ट जो है, एक्ट ऑफ नैपिंग, एक्ट ऑफ टेकिंग अ नैप 40 विंग्स, कैन दिस बी सीन एज अ एक्ट that is viewed by society with opprobrium? We cannot say that as per the passage, so second should be incorrect. बाकी डिपेंड करता है, थोड़ा सब्जेक्टिविटी तो है यहाँ पे, क्योंकि हम opprobrium को हटा दें तो बाकी सब कुछ काइंड ऑफ करेक्ट है, बट यस दिस सीम्स टू बी इनकरेक्ट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, सेकंड शुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, थर्ड वन, ग्रांट सब्जेक्ट्स द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी टू द विजडम ऑफ द बॉडी। तो यस, ग्रांट ने अल्टीमेटली क्या किया? सरेंडर किया बॉडीज क्वाइट विजडम ओवर सोसाइटीज रिलेंटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो उसने क्या है, प्रेफर किया बॉडीज क्वाइट विजडम ओवर
society's relentless performance metrics. यानी कि demands of society has been subjected to wisdom of the body. So yes, this is correct. सबने यानी कि प्रेफर किसको किया? wisdom of the body over demand of the society. ठीक है. So third is correct statement. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पैसेज. The process by which countries close their labor productivity gap with the technology leader is based on convergence theory. Labor productivity gap with the technology leader is based on convergence theory. The convergence model divides economic eras into three phases. तीन phases कौन से हैं? Break away phase, catch up phase, and fine tuning phase. It also divides economic entities into two categories: the technology leaders and technology followers. The process begins with the development of a new technology, such as scavenging 3 million years ago, hunting 1 million years ago, farming 12,000 years ago, and industrial technology a little more than 200 years ago. During the breakaway phase, the per capita income of the technology leader, that is Western Europe and North America in the industrial era, rises, but is unchanged for technology followers. In the catch-up phase, the followers adopt the new technology and close their per capita income gap with the technology leaders. And in the last phase, fine-tuning phase, where participants try to extract the remaining benefits from an increasingly exhausted technology, leaders and followers have similar per capita incomes. क्या क्लियर है? ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या डिवीजन किया है कि कंट्रीज हैव बीन कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी गैप बिटवीन कंट्रीज, and that has been explained via convergence theory. Which divides economic eras into three phases. और phases हैं. फर्स्ट फेज है हमारा that of breakaway phase. In breakaway phase, the technology leaders, those who invent technology, they advance. ठीक है. They have a faster growth rate. टेक्नोलॉजी लीडर्स के लिए. While technology followers are having zero growth, unchanged for technology followers. So zero growth. Second phase is that of catch-up phase, in which technology followers start growing. ठीक है. Start growing, और the gap between technology leaders and followers is decreasing. And third phase, last phase, is that of fine-tuning, in which any remaining benefits whatsoever from the technology, from an increasing exhausted technology, leaders and followers ultimately क्या है? Similar per capita income हो जाता है for technology leaders and technology followers. The incomes are, per capita incomes are almost similar. These are three phases. First question: which of the following conclusions are correct? First statement: in the breakaway phase, economic progress is slow for the technology followers. हमारा स्टेटमेंट साफ साफ कह रहा है कि टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स आर इनकम ऑफ टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स दैट इज अनचेंज्ड, यानी जितना है उतना ही रहेगा. तो यहाँ पे क्या, इकोनॉमिक प्रोग्रेस is जीरो. जीरो फॉर टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स. स्लो नहीं है, जीरो है. तो स्लो इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो. अनचेंज्ड है. अनचेंज्ड इज द राइट वर्ड, एंड स्लो इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनचेंज्ड. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट. Second one: in the catch-up phase, leaders stagnate and followers therefore close the gap between them and the leaders. अब देखो सेकंड हाफ तो करेक्ट है कि फॉलोअर्स क्लोज द गैप बिटवीन देम एंड द लीडर्स, बट लीडर्स स्टैग्नेट करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज नॉट गिवन. तो ऐसा भी हो सकता है कि लीडर्स का ग्रोथ है, ग्रोथ का स्पीड स्लो हो जाए, बट दे आर स्टिल ग्रोइंग. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. स्टैग्नेट इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, so this is incorrect. But they might still be growing, growth slow हो जाए, ये पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. जरूर थोड़ी स्टैग्नेट करें. Third one: in the fine-tuning phase, technology is exhausted, as it were, and both leaders and followers attempt to extract leftover benefits, leading to more or less similar per capita income levels. So thus third statement हमारा करेक्ट है. फर्स्ट सेकंड दोनों इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन ये आंसर होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड दोनों इनकरेक्ट है. फोर्थ वन: इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी फॉलोड स्कैवेंजिंग विच प्रोसीडेड हंटिंग विच इटसेल्फ वाज फॉलोड बाय फार्मिंग. इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी फॉलोड स्कैवेंजिंग, दैट इज करेक्ट, क्योंकि पहले स्कैवेंजिंग आया, बाद में आया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. एंड विच प्रेसीडेड हंटिंग. Scavenging preceded hunting, and hunting was followed by farming. So yes, this is correct. Scavenging, then hunting, then farming, and finally industrial technology. So that is correct. Both 3 and 4 are correct statements. Option ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. Which of the following statements are correct?
तो कन्वर्जेंस मॉडल डिवाइड्स नेशंस इनटू 3 फेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कन्वर्जेंस मॉडल डिवाइड करता है नेशंस को, क्या नेशंस को डिवाइड थोड़ी करता है, ये डिवाइड करता है इकोनॉमिक एराज को इन 3 फेजेस। So nations is given in this, that is why this is not correct. Second, at the heart of the convergence theory is the closing of the gap between labor and productivity. This is also incorrect because this is not about closing of the gap between labor and productivity, rather labor productivity gap between countries, between technology leaders and technology followers. So this is also incorrect. Third one, technology leaders typically have arrived earlier at different economic eras. Yes, this is correct. Fourth one, the time period covered by the convergence theory presented herein encompasses, as mentioned, 4,12,200 years. तो क्या ये करेक्ट है एज पर द गिवन क्वेश्चन? वैसे तो 3 और 4 कहीं पे आंसर ही नहीं है, तो आंसर तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 ऑनली है, पर अदरवाइज ऑल्सो दिस इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3 मिलियन ईयर्स अगो स्कैवेंजिंग was started, so that was 3 million years ago, ठीक है। और फिर 1 मिलियन ईयर्स अगो हंटिंग स्टार्ट हुआ, देन 12,000 ईयर्स अगो फार्मिंग, एंड फाइनली 200 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ है न्यू टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने ऐड कर दिया इन सारी वैल्यूज, जब पर ऐड थोड़ी करना है। 3 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ हंटिंग, ठीक है, स्कैवेंजिंग, देन हंटिंग, देन फार्मिंग, एंड देन फाइनली इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा का पूरा हमारा कहानी है, दिस इज अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो, नॉट 4,12,200 ईयर्स अगो, ठीक है। सो ये पूरी स्टोरी हमारी 3 मिलियन ईयर्स की है, और सिर्फ दैट इज वाई फोर्थ इनकरेक्ट है, 3 करेक्ट है, हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर, ठीक है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो हमें जरूर मेंशन करना। और दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।